Hi everyone, welcome to the session. So guys, today we are going to discuss 2023 short answer questions type, right? So in this series, we have reached a 2023 slot. So let's see. The first question of this slot is that Vinita drives a car which has 4 gears. Okay. The speed of the car in the fourth gear is 5 times its speed in the first gear. The car takes twice the time to travel a certain distance in the second gear as compared to the third gear. In a 100 kilometers journey, Vinita travels equal distances in each of the gears. Okay, so 100 kilometers, 4 equal distance, yani 25 kilometers she travels on each gear, and it took 585 minutes to complete the journey. Question is, instead, if the distances covered in the first, second, third, and fourth gear are 4, 32, and 60 kilometers respectively, then total time taken in minutes to complete the journey. Okay, so see, I have 4 gears. So, agar let's say gear 1, gear 2, gear 3, and gear 4. नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्पीड है हमारी फोर्थ गियर में दैट इज 5 टाइम्स. तो अगर हम स्पीड फर्स्ट गियर में x ले लेते हैं तो फिफ्थ गियर में स्पीड विल बी 5x, सॉरी, ठीक है, बिकॉज फोर्थ गियर का जो स्पीड है वो 5 टाइम्स है फर्स्ट गियर की स्पीड का. अब सेकंड और थर्ड गियर के बारे में क्या दिया है कि द कार टेक्स ट्वाइस द टाइम टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन द सेकंड गियर एज कंपेयर टू द थर्ड गियर. One thing we know कि speed and time are inversely related if the distance is constant. तो यहाँ पे over a certain distance जो मुझे सेकेंड गियर में टाइम लग रहा है और थर्ड गियर में जो टाइम लग रहा है उसका रेशियो इज 2:1, है ना. टाइम किस रेशियो में लग रहा है? 2:1 में. तो स्पीड्स का रेशियो हैज टू बी 1:2, राइट. तो सेकेंड इंफॉर्मेशन जो हमने निकाला रिलेटेड टू द स्पीड्स, इस सेकेंड गियर में अगर स्पीड 1 है तो थर्ड गियर में उसका ट्वाइस हो जाएगा. तो लेट्स एज्यूम कि अगर सेकेंड गियर में स्पीड इज y तो थर्ड गियर में स्पीड हैज टू बी 2y. ठीक है, y है तो 2y हो जाएगा. देन ये कह रहा है कि विनीता ने 4 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं ऑन ईच गियर 100 किलोमीटर की जर्नी में. तो दैट मीन्स कितना टाइम उसको लगा होगा फर्स्ट गियर में 25/x, सेकेंड गियर में जो टाइम लगा होगा 25/y क्योंकि सेकेंड गियर में स्पीड ये है. थर्ड गियर में जो टाइम लगा होगा 25/2y एंड फोर्थ गियर में जो टाइम लगा होगा इट इज 25/5x एंड दिस टोटल टाइम इज 585. ये टाइम सारा ऐड करके कितना बन रहा है? 585. चलो लेट्स सिंप्लीफाई दिस. इफ आई टेक 25 कॉमन, तो इन द ब्रैकेट लेट्स सॉल्व इट. डिनोमिनेटर में आई विल बी हैविंग 10xy. ठीक है, डिनोमिनेटर में आ गया 10xy इज इक्वल्स टू 585. x है यहाँ पे 25 आई हैव ऑलरेडी टेकन कॉमन. लेट्स सिंप्लीफाई इट. 5 टाइम्स 25, 51, 51, 57. ठीक है, दिस इज 117. अब यहाँ पे वी हैव x तो ऊपर आ जाएगा 10y. देन आई हैव y यहाँ पे है तो आई नीड 10x. ओके, यहाँ पे it is 2y तो it has to be multiplied with 5x. In the numerator I have 5x. यहाँ पे I have to multiply it with 2y. So 2y, it will be 2y in the numerator. Right? Finally, इसको solve करके अपने पास क्या क्या बचेगा? 10x plus 5x. Okay. 15x and 12y. 10x plus 5x, 15x, 10y plus 2y, which is 12y. ठीक है. And this 5 से यहाँ पे 2xy. In the numerator, I have 2xy is equals to 117 आया यहाँ पे. Till I have 3 common. So 3 5 times, 3 4 times. Here I have 3 3 3 9. So finally it is 5x plus 4y over 2xy. और simply अगर हम xy ले लेते हैं तो that comes out to be 78. Okay, तो जब हम इसको simplify करते हैं तो this equation comes to me. यानी somewhere I have to use this equation. चलो let's do it further.
अब ये कहता है कि इफ द फर्स्ट गियर में अगर 4 चला है तो 4/x, सेकेंड गियर में भी 4 चला है तो इट इज 4/y, इन द थर्ड गियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 32, तो 32 ओवर 2y, एंड फोर्थ गियर में 60 किलोमीटर है तो 60 ओवर आई हैव 5x. नाउ आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करके देखना है कि कितना टाइम हमारे पास आने वाला है, हाउ मच टाइम इट विल टेक. लेट्स सी इस वैल्यू का कहाँ पे यूज होता है. लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफाइंग इट. सो इफ आई टेक सेम केस in the LCM, I will be having 10x, 10xy. So let's take the LCM. तो LCM लेते हैं तो I have 10xy here. Okay. तो same situation, I have to multiply this with 10y. So 10y means it is 40y. This will be 40x. It has to be multiplied with 5x. So 32 into 5, that is 160x, and it will be 2y. So 120y आएगा ये. So finally, see, 10 is common in everyone, तो हम हटा देते हैं 0 0 0 and 0. 10 is cancelled out. Now it is 4x, 4x है हमारे पास plus 16x, तो ये हो जाएगा 20x, and 4y plus 12y, तो that is 16y over xy. Okay. अब clearly यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखते हैं, इसमें से if I take 5 common in the bracket, I have 5x plus 4y over xy, right? And इसकी value we already have 78, so finally 5 into 78, right? 5 8 times 40, 5 7 times 35, right? It is 78, and I have taken 4 I have to take common, not 5. It has to be 4, right? So 4 8 times 32, so 312 minutes. कितना टाइम लगेगा इसको? 312 मिनट्स. तो इफ विनीता हैज ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर फर्स्ट गियर, 4 किलोमीटर सेकंड गियर, 32 किलोमीटर थर्ड गियर, 60 किलोमीटर फोर्थ गियर पे, तो टोटल टाइम शी वुड हैव टेकन 312 minutes. Okay, let's see next situation. If three consecutive coefficients in the expansion x plus y whole to the power n are in the ratio 1:9:63, then value of n बताना है. Okay, how do we expand the binomial expansion? तो binomial expansion का idea है अपने को कि we are saying x plus y to the power n, right? तो x plus y whole to the power n, the expansion will be like this: nc0, x to the power n, y to the power 0. Then I have nc1 plus x to the power n minus 1, y to the power 1, and so on. ठीक है. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि थ्री कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स हैं जिनका रेशियो कितना है 1:9:63 है. तो व्हाट आई कैन डू, लेट्स एज्यूम वो कोफिशिएंट्स तो ऑब्वियसली देखो nc0 nc1 इसी से कोफिशिएंट आएंगे, राइट? जो वेरिएबल्स हैं उनका तो एज सच कोई रोल रहेगा नहीं कोफिशिएंट्स में. तो लेट अस एज्यूम कि अगर हमारा कोफिशिएंट्स आर ncr, ठीक है, तो इसके आगे वाला जो कोफिशिएंट होगा दैट इज ncr plus 1 बिकॉज दे आर कॉन्जिक्यूटिव. इससे पीछे वाला जो कोफिशिएंट रहेगा दैट इज ncr minus 1. अब इनका रेशियो हमारे पास है 1:9:63, तो ऑब्वियसली हमें दोनों रेशियो को लेकर के कंपैरिजन करना पड़ेगा. तो इफ आई टेक ncr ओवर ncr minus 1, राइट? तो ऑन सिंप्लीफाइंग इट, इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली द सिंप्लीफाइड वैल्यू. इट कम्स आउट टू बी n minus r plus 1 over r. ठीक है, n minus r plus 1 over r, right? And this is equals to 9:1. This is equals to 9:1. So let's solve it. N minus r plus 1 is equals to 9r, right? So 10r, n plus 1 is equals to 10r. That is one equation.
And similarly, I have to compare NCR with NCN plus R, right? On simplifying this, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आएगा NCR, in the denominator I will be having R plus 1 and यहाँ पे आएगा N minus R plus 1 plus 1, right? And this ratio is equal to I have 9:63 or 1:7, right? That ratio comes out to be 1:7. Let's solve it. इसको if I solve it, so one equation I have here and एक equation यहाँ से solve करने पे that comes out to be n minus 7 is equal to 8r. N minus 7 is equals to 8r. That is our second equation, right? So दो equations अपने पास आ जाएंगी by solving this ratio and then by solving this ratio simply using n factorial over n minus r factorial into r factorial, right? So on solving, I get the two equation. Now, if I have to solve it, let's divide equation 1 by equation 2. So 10r over 8r is equals to n plus 1 over n minus 7. So r and r is cancelled out. It is 2, 5 and 4 is here. So 5n minus 35, it is equal to 4n plus 4, right? So the value of n is 39. So n comes out to be 39. The question यही था, what is the value of n? It means n is 39. Anyways, next problem is the total number of positive integer solutions. So we are looking for the solution for positive and integral solutions, right? So positive integral solution means 0 is not allowed. So we have a direct formula for the integral solution, which is n minus 1 CR minus 1. Right? By using this formula, I can directly find out the number of positive integral solutions. Right? For the positive integral solutions, I have direct formula n minus 1 C R minus 1. अब condition क्या है कि a plus b plus c a plus b plus c, right? It is equals to 21, right? मतलब 21 is allowed when we are talking about integral solutions. So a plus b plus c can be 21, a plus b plus c can be 22. ठीक है, सम 22 चल सकता है मेरे को. A plus B plus C can be 23, right? It can be 24 and it can be 25. 24 and 25, right? So we have to find out all these solutions and just add all those values. So first of all, I will find the integral solution, positive integral solutions हम निकाल लेते हैं for a plus b plus c 21 के लिए. तो n minus 1, यहाँ पे n कितना है 21 है, ठीक है, r कितना है 3 है, 1 2 3. So it will be 20 and c2, right? 20 c2, it will be 21 c2, right? It will be 22 c2, this will be 23 c2 and it is 24 c2, right? 20 c2 will be 20 into 19 by 2. It is 21 into 20 over 2. It is 22 into 21 over 2. Then it will be 23 into 22 over 2 and finally 24 into 23 over 2, right? क्योंकि NCR को solve करना अपने को आता है directly, so n into 20 into 19 by 2. So let's solve it. So this value comes out to be 190. Okay, this value comes out to be 210. तो इसके 210 solutions अपने को मिलने वाले हैं. It is 11. So 11 one times, 11 22 23. So 231 it will be.
Here I have 11 3 times 33, 22 3, 25, 253 solutions, and iske I have 12. So 12 3 times 36, 24 and 3, 27. All I have to do is just add these values. So here I have 6 plus 3, 9, 10. So there will be a 0 at the end. 1 carry forward. 9 plus 1, 10, 11, 14 plus 5, 19, 19 and 7, 26. So I have a 2. So 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 1106. 110, 1160. 1160 number of solutions will be there which satisfy this condition that a plus b plus c is should be greater than equal to 21 and less than equal to 25, right? The basic formula, if I know, just put the formula, get the value. So since we are looking for integral solutions, तो a plus b plus c के positive integral solutions क्या बनेंगे? 190, 22 के लिए 210, for the sum to be 23, 24, 25. So if I add all these value, I'll get 1160, right? 1160. Let's move to the next. The product of the roots of the equation log 2 on base 2 log x on base 2 का whole square. इसके roots का product अपने को चाहिए. Now if I write this equation, since we have log here, I can write it as log 2 x whole square log 2 on base 2, right? तो पावर में अगर कुछ है तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, right? We know that if I have log b to the power c on base a, this can be written as c log b on base a, right? And it is 5 log x on base 2 plus 6 equals to 0. Now this portion will be 1 because log of 2 on base 2. Base and number are same, so it will be 1. So finally ये बन जाएगा मेरे पे कितना? Log x on base 2 का whole square it is minus 5 log x base 2 plus 6. Clearly अब दिख रहा है कि this is a quadratic equation in which variable क्या है मेरा? x है. एक काम कर सकते हैं, log x on base 2 को t मान लेते हैं. So what I'll do, let this log x on base 2 is equals to t. Now the quadratic equation will be t square minus 5t plus 6 it will be, right? Minus 5t plus 6 it will be. Let's factorize it. Equals to 0 we have. Let's see, two numbers are 3 and 2. 3 and 2, the sum will be 5 and product has to be positive 6. Sum has to be minus. So minus 3 minus 2. Value of x will be plus 3 and plus 2. These two are the values of t. So t comes out to be plus 3 and plus 2. So let's say अगर हमारा log x on base 2 is equal to 3 and दूसरा केस क्या होगा? log x on base 2 is equal to 2. So this is a 2 cube. X is equals to 2 cube, which is 8. And यहाँ पे x is equals to 2 square, which is equal to 4. Right? तो अपने को क्या करना था? We need to find out the product of the roots. So which is 8 into 4, 32. Answer for this question will be 32. Right? Easy question. Just apply the concept of log, properties of log, and then factorize it and get the answer. So guys, next situation is f of 1 का value is given to 1. F of n is 3n minus f of n minus 1 for all integers n greater than equal to 2. N has to be greater than equal to 2 here. Up see, if I let's find out the value of f of 2. I think this one is not visible. Use f of 2 निकालते हैं, ठीक है? So f of 2 will be 3 times of 2 minus f of 2 minus 1, which is 1. तो f of 1 का value is already given to be 1. तो ये हो जाएगा अपना कितना? 6 minus 1
which is f of 1 is 1, so 3 2s are 6, it is 5. Okay, f of 2 मिल गया अपने को. Let's see f of 3 कितना है. f of 3 में I have 3 into 3 which is 9 minus f of 2 I have calculated 5, so 9 minus 5 which is 4. Then f of 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो f of 4 will be 3 into 4 12 minus f of 3 which is 4, so that comes out to be 8. Let's see f of 5 कितना मिलता है. f of 5 will be 3 5s are 15 minus f4 which is 8, so that is 15 minus 8 7. f of 6 check कर लेते हैं. I have 3 6 are 18 minus 7 which is 11. Okay, तो अगर हम यहाँ पे सीरीज देखें तो f of 1 का वैल्यू इज 1, राइट. f of 2 कितना दिया हुआ है 5, f of 3 is 4, f of 4 is 8, f of 5 is 7 and f of 6 is 11. क्लियरली एक सीरीज अपने को यहाँ पे समझ आ रहा है कि यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट द सीरीज नाउ. लेट्स सी क्या सीरीज बन रही है यहाँ पे. इफ यू सी 1 plus 3 4, 4 plus 3 7, then here I have 5 8 and 8 plus 3 11 plus 3, ठीक है, plus 3 plus 3, ये सीरीज निकल के आ रही है. तो अब नाउ अगर हमारे पास देखो n ऑड है, ऑड सीरीज है, अगर n अपना ऑड है तो फॉर n इज ऑड हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है a comes out to be 1 and d is 3. ठीक है. फॉर n इज इवन, अगर हम n इवन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 5, राइट, एंड डिफरेंस इज 3 इन बोथ द केसेस. तो डिफरेंस तो हमारा देखो दोनों में क्या है 3 है. अब अगर हम देखते हैं 2023 को, हमें क्या चाहिए वैल्यू f of 2023, तो 2023 इज एन ऑड नंबर ना. f of 2023 क्या है, ऑड नंबर है, यानी हमें फर्स्ट वाला सीरीज का वहां पे यूज करना पड़ेगा. तो उसके लिए इस सीरीज के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 4, देन आई हैव 7, ठीक है, 7 plus 3 10 एंड सो ऑन, ये सीरीज होगी. एंड यहाँ पे क्या है मेरा n इज ऑड. तो इस सीरीज के लिए हमें देखना है ये f of 1 पे था, ये f of 2 पे था, f of 3, f of 4, है ना. n ऑड के लिए अगर हम ऑड सीरीज की बात करें तो ऑड सीरीज में दिस इज माय f of 1, दिस इज f of 2. इसको अगर आप देखोगे तो ये f of 1 था, ठीक है, ये f of 3 पे मिला था ना मुझे, इट इज दैट f of 3. फिर ये था f of 5 पे, दिस इज एट f of 5. तो सिमिलरली हमें चाहिए nth टर्म विच शुड बी f of 2023. आई नीड अ टर्म जो कि कितना होना चाहिए f of 2023. तो लेट्स फाइंड आउट कि वो जो टर्म होगी f of 2023, वो टर्म मेरी क्या हो जाएगी, दैट इज फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 एंड द डिफरेंस, डिफरेंस हमारा कितना चल रहा है यहाँ पे 3 चल रहा है, ठीक है. तो ये तो मुझे दे देगा वो F202 थर्ड पोजीशन पे जो टर्म है, राइट. तो अगर हम यहाँ से 2023 निकालें, राइट, तो f of 1, f of 3, f of 5, सिमिलरली जो टर्म होगी अपनी f of 2023, तो वो कौन सी पोजीशन पे होगी, लाइक इफ दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 5, तो ये खुद भी एक AP बना रहा है, राइट. इसमें फर्स्ट है, थर्ड है, 5 है, तो 2023 का क्या पोजीशन होगा. तो 2023 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n minus 1 and the difference is 2, because it is तो सिंपल ऑड नंबर सीरीज है ना, 1 3 5 7 9. तो वो जो 2023 पोजीशन पे होगा, which term is that? So 2023 it will be 2022 over 2 is equals to n minus 1. ठीक है, तो हम n minus 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, which comes out to be 1011. if 1011 को हम यहाँ पे n minus 1 की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं,
1 plus 1011 minus 1 into 3. अच्छा, इसका तो डायरेक्टली वैल्यू 1011 था ना. It is 1011 into 3. It comes out to be 1 plus 3033. Right? So that is 3034. So f of 2023 will be 3034 it will. Right. Next situation is f of n is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n plus 1. ठीक है, तो सिंपली क्या दिख रहा है कि इट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ना, बट यहाँ पे nth टर्म की जगह कितना n प्लस 1 है, तो इसका जो सम हो जाएगा दैट विल बी n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 2. राइट, सिंपली हमें n इंटू n प्लस 1 बाई 2 की जगह n की जगह क्या रखना है, n प्लस 1 रखना है, तो n प्लस 1 की जगह n प्लस 2 आ जाएगा. तो दिस विल बी द f ऑफ n. ठीक है, f ऑफ n हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 ओवर 2. एंड यहाँ पे वी हैव द समेशन g ऑफ n क्या है, दैट इज द समेशन ऑफ 1 अपॉन f ऑफ k. ठीक है, k की वैल्यू विल बी बिटवीन 1 टू n होने वाला है. ओके, तो हियर आई हैव g n की अगर हम बात करें, ठीक है, g अगर हम सिंपली g n की बात कर रहे हैं, तो इट इज समेशन ऑफ 1 अपॉन f ऑफ k, है ना. मतलब कि अगर इफ आई हैव फर्स्ट टर्म तो वो तो 1 ही रहेगा, है ना. f ऑफ ये हो जाएगा 1 अपॉन f ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन f ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन f ऑफ 3 एंड सो ऑन टिल विच टर्म, टिल nth टर्म, है ना, टिल यहाँ पे 1 अपॉन f ऑफ n. राइट, टिल कहाँ तक, 1 अपॉन f ऑफ n तक. ठीक है, ओके. तो हियर वी हैव f ऑफ n. f ऑफ 1 कितना आएगा, इफ आई सब्सटीट्यूट इन प्लेस ऑफ n, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 प्लस 1 2, 2 and 2 cancelled, 1 plus 2 is 3. तो दिस कम्स आउट टू बी 1 by 3. ठीक है, n को 2 रख लेते हैं, 2 plus 1 3, 2 plus 1 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 2 6, ये आ जाएगा 1 by 6. देन पुट f की जगह 3 रखते हैं, 3 plus 1 4, 4 इंटू 5 20 20 by 2 10, तो ये आ जाएगा मेरा 10. एंड लाइक दिस अगर n पुट करेंगे तो फाइनली 2 ऊपर चला जाएगा एंड नीचे अपने पास रह जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1. राइट, सिंपल सा फंडा क्या था, f ऑफ n का वैल्यू था n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 2. राइट, एंड g ऑफ n इज द समेशन ऑफ 1 अपॉन f ऑफ k. मतलब gn को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन f ऑफ 1 प्लस 1 ऑफ f ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन f ऑफ 3 टिल 1 अपॉन f ऑफ n तक. नाउ n को अगर हम 1 रखते हैं तो आई विल बी गेटिंग 3, तो यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, f ऑफ 2 की 6, f ऑफ 3 की 10. अब इसको वी हैव, अब दिस वैल्यू वी वांट दिस वैल्यू टू बी ग्रेटर देन 99 by 100. ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन कि g ऑफ n जो है, then the least value of n for which g of n exceeds the value 99 by 100. तो ये जो समेशन है, I want this to be above 99 by 100. तो for what value of n? ओके, अब ये थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको सीरीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखना चाहिए, दैट इट इज, हम इसको टेलीस्कोपिक सीरीज या दूसरी सीरीज में देखते हैं कन्वर्ट करके. तो इट इज 1/3, यहाँ पे एक 2 है. लेट्स डू वन थिंग, कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें विद 2, इफ आई मल्टीप्लाई डिवाइड दिस विद 2, ठीक है, तो फाइनली इस 2 को बाहर ही रखते हैं, ये हो जाएगा मेरा 6. दिस विल बी 1 अपॉन 12, it would be 1 upon 20 and ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आई हैव 1 अपॉन n प्लस 1 into 2n plus 1. This whole value, I need this value to be above 99 by 100. Okay, ठीक है, ये वैल्यू अपने को कितना चाहिए, ग्रेटर देन 99 by 100.
Okay, a slight mistake I have done here. It is n plus 2. So let me just correct it. So it is basically n plus 1 and n plus 2 it is. So n plus 2 ये होना चाहिए, right? अब to convert it into the series, let's see एक pattern बनाने के लिए what I did, I multiply divided with 2. तो ये वाला 2 cancelled out हो गया. So it is 6. Let's see, इसको further simplify करते हैं. Now I have 1 by 6. I can write it as 2 into 3 plus 1 by 3 into 4. Then I have 4 into 5. Okay, and so on. It will be like this. N plus 1, n plus 2 greater than 99 by 100. So now the most important part of it. यहाँ पे see I have 2. I can write it as 1 by 2 minus 1 by 3. Right? This I can write as 1 by 3 minus 1 by 4. Then I have plus 1 by 4 minus 1 by 5. And so on. And at the end I have 1 up plus 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2. This whole value should be greater than 99 by 100. Now see, this part is cancelled. This cancel, this, all of them will be getting cancelled. So finally, I am left with 2 times 1 by 2 minus 1 upon n plus 2. This value should be greater than 99 by 100. Okay, so let's solve it. ये हो जाएगा अपना कितना 2 times n plus 2 and ऊपर आ जाएगा n plus 2 minus over 100. 2 and 2 cancelled. ये finally बचेगा n over n plus 2 should be greater than 99 by 100. So 100n greater than it is 198n 198 99n 198 plus 99n. So n should be greater than 198. That is what we are looking for, the least value of n for which gn exceeds 99 by 100. N should be greater than 198. So the least possible value has to be 199, right? The question was find the least value. So the least value is 199. 199 will be the least possible value. Next problem is we have a polynomial degrees 10. It is given that when it is divided by x minus 1, it leaves a remainder 2. So simply it means that if I substitute x is equal to 1 in the equation, I should get remainder as 0. है ना, because x minus ये जो पूरा का पूरा मेरा polynomial है, it is perfectly divisible by x minus 1. तो perfectly divisible by minus 1 का मतलब क्या है कि if I substitute x as 1, तो remainder should be 0. है ना, if I put x as 1, तो I should get remainder as 0. तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, minus 1 plus 3 minus 5 plus c into 1, तो c रहेगा plus 2 minus 1 plus 1 minus 4 plus 6 minus 2 is equals to 0. Simply जहां जहां पे x है we have to substitute it with. Let's solve it. So I have 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 plus 6 15. So this is plus 15. Then 1 plus 5 that is 6, 6 plus 1 7, 7 plus 4 11, 11 plus 2 13,
plus c is equals to 0. So from there, let's see, have I missed any number? I have 4 plus 3, 7, 7 plus 2, 9, 9 plus 1, 10, 10, 10 it is, and 6, 16. Okay, the remainder is actually 2, not divided. The remainder is actually 2. तो यहाँ पे 0 नहीं रहेगा. All I have to do, in place of 0 आपको यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा. ठीक है, I missed that word. तो इसने क्या बोला है कि जब आप x minus 1 से इसको डिवाइड करोगे तो you get a 2 as remainder. राइट, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 2 नहीं होता तो I would have to take 0, बट क्योंकि it is already given in the question कि remainder is 2 and ये वैल्यू कितना है 16, तो 3 plus c comes out to be 2, तो c का वैल्यू is -1. ठीक है, c comes out to be -1. तो वैल्यू ऑफ c plus 6 यानी -1 plus 6 will give me 5. So the answer for this has to be 5. Right, तो यहाँ पे ध्यान रखना because remainder is 2 given to me in the question, तो not 0. If I substitute x as 1 in the equation, I should get 2 as the answer. Okay, next is the remainder when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial up to 95 factorial is divided by 15. Okay, let's see. यहाँ पे अपने को देखना है कि see 1 factorial is simply 1. No issues with that. 2 factorial is 2 into 1. Okay, 3 factorial is 3 into 2. Then I have 4 factorial. 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1. Right? And 5 factorial. अब एक चीज अपने को देखना है कि if a number is divisible by 15, तो 1 factorial में there is no 15, 2 factorial में no 15, 3 factorial में no 15, 4 factorial में again no 15, but 5 factorial में I have 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So 5 factorial contains a 15. So 5 factorial is perfectly divisible by 15. Then if I talk about 6 factorial, 7 factorial, 8 factorial, because 15 means I need a 3 and 5, right? So beyond 4 factorial, every factorial I have a 5 and 3. So if 15 is there, that means those numbers are perfectly divisible by 15, right? So I just have to check the remainder up to 4 factorial, because beyond that I would be getting a remainder 0, right? Beyond that the remainder would be 0, right? So 1 factorial is 1, factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24. So I have to just check what is the remainder from this part, right? So 24, 6, 30, 32, 33. So 33 divided by 15, the remainder is 3, right? The remainder for this is simply 3, right? Because up to beyond 5 factorial, 5 factorial के बाद हर factorial में 15 आएगा, तो that is perfectly divisible by 15. So उससे remainder 0 आएगा, तो that will not affect the final remainder. तो जो up to 4 factorial बस हम check कर लेंगे what is the remainder, that will be my final remainder. Yeah. Next we have A, B, C, D positive integers such that A plus B plus C plus D is equal to 2023. A ratio B is 2 ratio 5, C ratio D is 5 is to 2, and I have to find out the maximum possible value of A plus C. Now see, A को I can take as 2x, B को I can take as 5x, because AB का ratio कितना है 2 5 का. C को I can take 5y and D को हम ले सकते हैं 2y, and this total is 2023. Okay. Now यहाँ पे I have 7, दोनों में 7 आ जाएगा, 7x plus y, 7x plus y is equals to 2023. x plus y का वैल्यू देख लेते हैं हम कितना आ रहा है. So 7 2 times 14, 6 कॉमन आएगा, 7 8 times 56, 289. Now see, x plus y comes out to be 289. ठीक है, x plus y comes out to be 289.
नाउ द क्वेश्चन इज कि वी हैव टू मैक्सिमाइज, अपने को मैक्सिमाइज करना है किसको, a प्लस सी को. आई हैव टू मैक्सिमाइज a प्लस सी. तो a इज 2x एंड c इज 5y. 2x प्लस 5y को मैक्सिमाइज करना है. x प्लस y हमारे पास कितना है, 289 है. ओके, इफ आई राइट इट लाइक दिस, 2x प्लस 2y प्लस 3y. ठीक है, तो इतने तक का तो वैल्यू आई नो कि इट इज गोइंग टू बी 289. ठीक है, 289 यहां तक हो गया. नाउ आई हैव, इफ आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस होल वैल्यू, आई हैव टू मैक्सिमाइज y. तो अगर y को मैक्सिमाइज करना है तो आई शुड मिनिमाइज x, है ना. इफ आई वांट टू मैक्सिमाइज y, आई हैव टू मैक्सिमाइज करना पड़ेगा y को, तो x को मिनिमाइज करना पड़ेगा, तभी अपने को a प्लस सी जो है वो मैक्सिमम मिलेगा. x प्लस वाई का वैल्यू 289 था, तो ये तो 2 भी होगा, सॉरी, ये 578 प्लस 3y. तो 578 तक तो ठीक है. अब हमें वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस. तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकता है. देखो, इफ आई मिनिमाइज x 1, तो y हैज टू बी 288, है ना. दैट इज अ पॉसिबल हो सकता है, राइट. तो in that situation my answer would be 578 plus 3 into, ठीक है, 578 में प्लस वी हैव टू ऐड 3 into 288, 864 plus 578, 1442. So this is the maximum value. So this is the maximum value for a plus c, which is 1442. So guys, next one is in the xy plane, let a is equal to minus 2 comma 0, b is equal to 2 comma 0. Define the set S as the collection of all points C on the circle x square plus y square is equal to 4, such that the area of the triangle ABC is an integer. So the number of points in the set S. So we have, the situation is like this कि let's say अगर हम एक visualize a plane, तो 2 comma minus 2 comma 0 will be somewhere here and 2 comma 0 जो है मेरा वो होगा यहाँ पे. अब सर्कल का इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो रेडियस हैज टू बी 2 बिकॉज 4 इज आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 2. so that means कि सर्कल विल पास थ्रू दीज पॉइंट्स ना, जो माइनस 2 कॉमा 0 एंड 2 कॉमा 0 है, द सर्कल विल पास थ्रू दीज पॉइंट्स. रेडियस मेरा कितना है, 2. so this is point A and this is point B. अब सर्कल पे एक पॉइंट C लेना है, तो C कैन बी एनीवेयर ना. लेट्स एज्यूम दैट कि अगर C सपोज यहाँ पे है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वी आर टॉकिंग अबाउट कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC हैज टू बी एन इंटीजर. तो अगर हम एरिया ऑफ ABC देखें तो बेस तो हमारे पास कितना है, AB. तो AB का लेंथ इज क्लियरली 4 यूनिट्स. ठीक है, AB का तो क्लियरली कितना है, 4 यूनिट्स. अब हाइट जो है दैट विल, बिकॉज सर्कल आपका कहीं ये जो पॉइंट C है ये इट कैन बी एनीवेयर ऑन द सर्कल ना. तो अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट अस एज्यूम कि इसका हाइट इज h. ठीक है, तो अब ये h आपका अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू देगा. तो अगर मैं इसका मैक्सिमम देखूं तो मैक्सिमम कब देगा ये मुझे, जब रेडियस के पास होगा, है ना, कि जब हाइट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो मैक्सिमम जो हाइट हो सकता है इसका दैट इज इक्वल टू द रेडियस. ठीक है, अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया का फॉर्मूला विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, half into AB, which is 4 into the height. ठीक है, into height. So I can say this कि area जो होगा ABC का that is 2h, right? तो अगर इंटीजर हमें चाहिए, नाउ सी 2, if I want h की वैल्यू अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ABC by 2, h is equal to ABC एरिया अपॉन 2 बोल सकते हैं हम इसको. अब अपने को देखना है कि जो हमारा मैक्सिमम हो सकता है हाइट वो कितना हो सकता है. हाइट इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 2, राइट. इट हैज टू बी
लेस देन इक्वल टू 2, या मैक्सिमम हम इसको बोल सकते हैं कि जो हाइट का रेंज है बेसिकली दैट इज बिटवीन 0 to 2। ठीक है, तो यहाँ पे h को हम अगर मैं लिख लूं कि एरिया ओवर 2, आई कैन से कि जो मेरा एरिया है दैट शुड बी बिटवीन 0 to 4। तो एरिया क्या क्या हो सकता है, 1 यूनिट हो सकता है, 2 यूनिट इट कैन बी, 3 यूनिट इट कैन बी, एंड 4 यूनिट इट कैन बी। राइट, यही 4 वैल्यूज हमारे पास एरिया के लिए आती हैं। ठीक है, तो उस केस में अगर एरिया हमारा 1 2 3 4 है, तो हाइट के लिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, हाइट कैन बी 1/2। ठीक है, हाइट कैन बी 1, 2/2। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें अगर एरिया, क्योंकि एरिया के लिए ये 3 पॉसिबल वैल्यूज है, बिकॉज वी नीड एरिया टू बी एन इंटीजर। तो 1 पे आ सकता है, 3/2 पे आ सकता है, और यहाँ पे 2 पे आ सकता है। राइट, 4/2 2 पे आ सकता है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं यहाँ पे, है ना। एक अगर मैं सिंपली एक क्वाड्रेंट में बात करूं, कि आपको दिख रहा है टोटल कितनी है, 4 वैल्यूज है। राइट, 4 वैल्यूज आर देयर इन 1 क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी 4 into 4। होनी कितनी वैल्यूज चाहिए, 16 वैल्यूज होनी चाहिए। राइट, 16 वैल्यूज वहां पे होनी चाहिए मेरे पास। बट एक चीज अपने को यहाँ पे देना है कि जो h है हमारा, ठीक है, जो h है हमारा, वो पॉइंट C का क्या है, y एक्सिस है ना। तो होल सर्कमफेरेंस पे जो हमारा C है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक आउट 2 पॉइंट। तो टोटल जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं दे आर 14। राइट, तो 2 पॉइंट जो हमने यहाँ से हटाए हैं, ये 2 पॉइंट कौन से हैं, A एंड B। तो वेन एवर सी को जब आप यहाँ पे रोटेट कराओगे, तो जब वो यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, एक पॉइंट हमारे पास ए एंड बी भी होगा, तो उस कंडीशन में तो ऑब्वियसली देखो ट्राइंगल बनने वाला है नहीं, तो वी हैव टू एक्सक्लूड दोस पॉइंट्स। राइट, तो ये जो 2 वाला पॉइंट था यहाँ पे 2, तो ये चारों क्वाड्रेंट में दिखेगा मेरे को, तो 2 - 2 ये वाला पॉइंट, दिस आई हैव टू नेग्लेक्ट। तो वो दो हमने उसको, इसलिए इन दोनों को हटा दिया यहाँ से। राइट, otherwise next situation is Amisha can complete a particular task in 20 days. ठीक है, if she works alone she can complete the whole task in 20 days. Now what happens, after working for 4 days she fell sick for 4 days and resumed the work on the 9th day. तो अभी तक 4 दिन का काम हो चुका है, right? But then she took a leave, and on the 9th day she started working half of her original work rate. Right, so whatever, let's say her efficiency is A, now she started working at the rate of A/2. She completed the task in another 12 days with the help of a co-worker who joined her from the 9th day. So from the 9th day onwards, the amount of work done by Amisha per day will be A/2. Let's say कि co-worker का efficiency is C, तो co-worker कितना काम करेगा पर डे, C। तो it took them how many days to complete the work, 12 days, right? She worked half of her efficiency, and with the help of the worker they take 12 days to do that job. Now the same piece of job can be done by her alone in how many days, 16 days, right? 4 दिन का काम आप हटा दो, 4 दिन का वर्क हो चुका है। तो लेट से कि अगर उसने लीव नहीं लिया होता, या शी डिड नॉट फेल सिक, तो काम उसके लिए कितने दिन का बचा था, 16 डेज का। तो द वर्क विच शी कैन डू अलोन इन 16 days इज डन बाय हर with her half efficiency plus co-worker in 12 days. So let's solve it. 4 3 4 4. So it is A plus 2C into 3 over 2 is equal to 4A. Have 3A plus 6C is equals to 8A. Now 6C is equals to 5A. So ratio of their efficiency of co-worker and Amisha is 5:6. Right? This is the efficiency. Now total work efficiency is 6.
Amisha can do 6 unit work per day and it took her 20 days to do the total work. So 6 into 20 or 120 is the total work. Now this work is to be done by the co-worker. So co-worker will take how much time? 120 by C, which is 120 by 5. So that is 24. So the co-worker will take 24 days alone to do that job. Right? For the co-worker, it will be 24 days. Okay, let's see next one. In an election with only two contestants, contesting candidates, 15% of the voters did not turn up to vote. Okay, and 50 votes cast invalid votes. 50 voters cast invalid votes. It is known that 40% of all the voters in the voting list voted for the winner. If the winner got 200 votes more than the other candidate, then the number of votes in the voting list is. So let us assume the total voters in the list are 100x. Okay. Out of this, 15x people did not vote. So how many people came to vote? 85x. Right? 85x came to vote. Out of these, 50 votes were invalid. So the actual number of votes to be counted are 85x minus 50. Okay. Now it is known that 44% of all the voters means 100x, because 100% of the voters in the voting list. So in the voting list, number of people are 100x. So out of which 44x they voted for the winner, right? So if 44x voted for the winner, how many people voted for the loser? 85x minus 50 minus 44. So that will give me 41x minus 50, right? From this whole value, this is the number of votes to be counted, out of which 44x voted for the winner. So remaining, which are 41x minus 50, they voted for the loser. And it is given that winner got 200 votes more than the other candidate. So the difference will be 200. So 44x minus 41x minus 50 is equals to 200, right? So 44x minus 41x, which is 3x, it comes out to be plus 50, but minus 50, that comes out to be 150. So x comes out to be 50. So total number of voters are 100x, 100 into 50. How many voters are there? 5,000 voters are there total. Total number of voters, 5,000. Right? So guys, in this case, assume it is the beginning of the year today. Okay, Ankita will earn 10,000 at the end of the year, which she plans to invest in a bank deposit immediately at a fixed simple interest of 0.5% per annum. Her yearly income will increases by 10,000 rupees per year, and the fixed in simple interest offered by the bank on new deposits will also increases by 0.5% per annum every year. If Ankita continues to invest all her yearly income in a bank deposits, at the end of each year, the total interest earned by her in 5 years from today. Okay, let us say this is the beginning of the year, and at the end of the first year, this is the this year. So after, if she begins today, at the end of the year, she will get 10,000. Right? Now this 10,000 she immediately deposited at 0.5% simple interest. Then at the end of the second year, she will get 20,000, right? Because her salary is increasing every year by 10,000. And also the rate of interest will increase by 0.5. So the rate of interest will become 1% for this amount. Then at the end of the third year, she will be depositing 30,000, right? That 30,000 will be invested at 1.5% per annum at the end of third year. Then end of uh, at the end of first year, at the end of second year, at the end of third year. So this is the fourth year. She will deposit how much? 40,000.
Now the question is how much she will get at the end of at the fifth year, right? For the fifth year, this is the principal rate of interest is 2%. So total how much interest she has acquired. Now see, for this 1,000 rupees, this 1,000 is invested for how many years? 1, 2, 3, 4 years. So interest on this will be 4 for 4 years. It will be 2%, right? 0.5 into 4, 2%. 2% of 10,000 is 200. So the interest she will collect on this amount is 200. Again, this amount is for 3 years. So interest from this part will be 3% of the principal, right? So it is 600, 3% of 20,000. Then this 1.5% is for 2 years, which is again 3%, right? So that will be 900. 900 for the this amount. Then this 2% on this amount, she will get interest for 1 year, which is 2%. That comes out to be 1% is 400, 2% is 800. Right? So it is 8 to 1,900. So total interest that she will get at the fifth year is 2,500. Okay, 5 years from today, she will be getting 2,500 rupees as the total interest. Okay, guys, here we have in a chess tournament, there are 4 groups, each containing an equal number of players. Now each player plays against every other player belonging to one's own group exactly once, right? Total 4 groups हैं, हर group में equal number of people हैं. So every player has to play exactly once against the member of his own group, right? Belonging to one's own group against each player belonging to one of the remaining 3 group exactly twice, right? तो दूसरे ग्रुप का जो भी मेंबर है अपने ग्रुप को छोड़ के उसके साथ एग्जैक्टली 2 बार मैचेस होंगे, ठीक है? अगेंस्ट ईच प्लेयर बिलोंगिंग टू वन ऑफ द रिमेनिंग 2 ग्रुप्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स, राइट? अगेंस्ट ईच प्लेयर बिलोंगिंग टू द रिमेनिंग ग्रुप एग्जैक्टली 4 टाइम्स. तो अपने ग्रुप के साथ एग्जैक्टली एक बार, अपने ग्रुप को हटा के जो बचे 3 ग्रुप उसमें से अगेंस्ट ईच प्लेयर बिलोंगिंग टू किसी एक ग्रुप के मेंबर से एग्जैक्टली थ्राइस, फिर जो बचेंगे twice, thrice, and 4 times. If more than 1,000 matches are being played in the tournament, the minimum possible number of matches, number of players in each group. तो हर प्लेयर में मिनिमम कितने हर ग्रुप में कितने मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए. Okay, guys, so let's start solving this. First part is matches within the group. ठीक है, तो अगर हम मैचेस विद इन द ग्रुप की बात करें तो see, 4 groups, every group is having n members मान लेते हैं, right? Each group is having n number of people. तो 4 groups है तो total number of players will be 4n, right? 4n. तो अगर हम बात करें कि the player has to play among their own groups, तो how many matches will be there? NC2, right? अगर एक ग्रुप में n members हैं तो for one match I will be needing 2 people. तो total NC2 matches होंगे. Since there are 4 groups, total number of matches among the group, within the group जो matches होंगे 4 into NC2, right? 4 into NC2. So if I solve it, 4 into n minus 1 by 2, it comes out to be 2n minus 2 into 2n into n minus 1. So these are the number of matches जो कि within the group होने वाले हैं, ठीक है? So that is for the first condition. Let's call it first case. Then comes to the second case. अब second case में इसको मार्क कर लेते हैं कि ये फर्स्ट, अगर अगेंस्ट एवरी प्लेयर बिलोंगिंग टू वंस ग्रुप एग्जैक्टली वन, तो सपोज देर आर एन ग्रुप्स, सॉरी एन मेंबर्स इन एवरी ग्रुप, तो टोटल 4n ग्रुप्स हो गए. एक ग्रुप के कितने मैचेस होंगे आपस विद इन द ग्रुप NC2, तो 4 ग्रुप्स बिकॉज देर आर 4n ग्रुप्स, तो 4 into this number of matches, right? Because 4 groups I have in total. Then second situation is कि where दूसरे केस में क्या है, मैचेस विद प्लेयर्स इन द अदर 3 ग्रुप्स, ठीक है?
अब देखो जो हर प्लेयर है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एक ग्रुप का कोई प्लेयर उठा लो, तो ईच प्लेयर जो है वो प्ले करेगा अगेंस्ट ईच प्लेयर इन द रिमेनिंग 3 ग्रुप्स एग्जैक्टली ट्वाइस। बाकी 3 जो ग्रुप हैं उसके हर मेंबर से जो मैच होंगे दे विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे बाकी 3 ग्रुप में दे वुड बी 3n ना, है ना। एक हर ग्रुप में n है, तो वो जो 3 ग्रुप्स है, वो जो 3 ग्रुप्स है, हाउ मेनी पीपल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लेयर्स विल बी देयर, 3n नंबर ऑफ प्लेयर्स विल बी देयर। तो हर प्लेयर जो है वो कितने मैचेस खेलेगा, ईच प्लेयर प्लेस ईच प्लेयर प्लेस 3n प्लेयर्स ट्वाइस। हर प्लेयर को 3n प्लेयर को ट्वाइस खेलना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो हो जाएंगे उस ग्रुप के दे विल बी 6n, है ना। क्योंकि 4 ग्रुप है, इसने क्या बोला है कि अगेंस्ट ईच प्लेयर बिलोंगिंग टू वन ऑफ द रिमेनिंग 3 ग्रुप्स। तो रिमेनिंग 3 ग्रुप्स में कितने मेंबर है, 3n मेंबर्स हैं, और हर प्लेयर को सबसे 2-2 मैचेस खेलने हैं। तो 3n प्लेयर से कितने मैचेस हो पाएंगे, 6n मैचेस हो पाएंगे, राइट। अब सिंस टोटल ग्रुप्स हमारे पास 4n है, सिंस टोटल ग्रुप्स आर 4n, I have to multiply this with 4n as well. That will give me the total number of matches, which is 24n square, right? ये हो गया हमारा सेकंड का। देन द थर्ड पार्ट, अगेंस्ट ईच प्लेयर बिलोंगिंग टू वन ऑफ द रिमेनिंग 2 ग्रुप्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स। अब मैचेस विद प्लेयर्स इन द, जो बाकी 2 ग्रुप्स बचेंगे विद प्लेयर्स इन 2 अदर ग्रुप। तो अब देखो इस केस में क्या होगा, सेम सिचुएशन, ईच प्लेयर हैज टू प्ले अगेंस्ट ईच प्लेयर इन 2 ऑफ द रिमेनिंग ग्रुप एग्जैक्टली 3 टाइम्स। तो अब जो बचे हुए 2 ग्रुप्स हैं, हाउ मेनी मेंबर्स विल बी देयर, 2n मेंबर्स विल बी देयर, और हर मेंबर से कितने मैच होने वाले हैं, 3 मैचेस होने वाले हैं। तो टोटल मैचेस हैज टू बी 6n, है ना। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैज टू बी 6n, राइट। एंड हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, 4n, 4n इंटू 6n, तो टोटल यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 24n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द थर्ड कंडीशन। फिर आते हैं फोर्थ कंडीशन पे, जो मैचेस होंगे विद प्लेयर्स इन द लास्ट ग्रुप, जो लास्ट ग्रुप बचेगा, तो ईच प्लेयर प्लेज अगेंस्ट ईच प्लेयर इन द रिमेनिंग ग्रुप एग्जैक्टली 4 टाइम्स, है ना। तो हाउ मेनी मेंबर्स इन दैट ग्रुप, n ग्रुप, ठीक है। और टोटल कितने मैचेस होने हैं, सबसे 4, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस विल बी 4n मैचेस वहां पे होने वाले हैं, राइट। एंड ऑल्सो टोटल ग्रुप्स आर देयर 4n, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज 4n 4n विच इज 16n स्क्वायर। अब ये सारे मैचेस जो हैं, 2, लेट मी राइट इट एज 2n स्क्वायर n minus 1 plus 24n square plus 24n square plus 16n square, it has to be greater than 1000, right? So now I have to just minimize the n. मेरे को क्या करना है, सिंपली n को मिनिमम बनाने का कोशिश करना है। Okay, so let's add this value. Sorry, it is 2n, 2n था ना। तो here I have 2n square minus 2n plus 24 plus 24, 48, 58, 58 and 6, it is 64n square greater than 1000. Then here I have 66n square minus 2n should be greater than 1000, right? So let's see for what value. Let's try to substitute. Either we can go for hit and trial कर सकते हैं n का value. Like for example, if I have n 66 n minus 2, ठीक है, ये वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन, इसको 1000 के आसपास हम रखने की कोशिश करते हैं। तो इफ आई सब्सटीट्यूट इट एज लेट्स से 5 रखते हैं फॉर एग्जांपल, n को अगर मैं 5 रखूं तो इट इज 5 इंटू 5 6 30, 330, 5 इंटू 330, तो 5 इंटू 330 ऑब्वियसली ग्रेटर देन होगा। तो लेट्स चेक विथ 4, तो 4 इंटू 4 24, 254, 254
minus 2. Sorry, 264 आ गया. So 4 into it is 262. Let's see क्या ये क्रॉस जा रहा है. 8 1048. ओके, आई थिंक 4 पे हो जाएगा, तो 3 पे ऑब्वियसली इससे भी कम चला जाएगा. तो फॉर n इज इक्वल टू 4, तो दैट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच ग्रुप हैज टू बी 4, राइट. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में पढ़ने से बेटर है ट्राई टू गो विद हिट एंड ट्रायल. n is equal to 4 has to be the correct answer. Okay, let's see the last one, 15th. The length of the line segment joining the intersection of the curves, एक हमारे पास है कितना, y is equals to 4970 minus mod x and y is equals to x square. So y is equal to x square is simply a parabola, right? So the length of the line segment joining the two intersection points of the curves, this, तो basically हमें क्या करना है कि intersection points इन दोनों equations के पहले find out करना है. Let's find out the intersection point. तो y को substitute कर लेते हैं x square. If I substitute y as x square in this equation, equation will changes to x square plus mod x minus 4970 is equals to 0. Okay, that comes out to be the equation. Okay. Now since I have a mod here, let's substitute mod x to be m. If I substitute mod x to be m, so the equation will comes out to be m square plus m minus 4970 is equals to 0. So when we factorize it, so I'm directly writing the value factorization key. It comes out to be m minus 70 and m minus m plus 7. So 70 into 7 will give me minus 70 into 70 1 it is, right, is equals to 0. So one of the value of m is equals to 70 and another value will be m is equals to minus 71. Now m is equal to mod x. So mod x will be 70 or mod x will be minus 71. So this minus 71 is not possible because mod cannot be negative. So mod x is equal to 70. So the value of x are plus minus 70. Right, plus minus 70, I have the value of x. Okay, so x, let's substitute and get the y coordinate. So y coordinate will be 4970 minus mod 70. So y is equals to 4900, right? तो अपने को दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए. एक हो जाएगा 70,4900, right? And दूसरा point of intersection will be minus 70,4900, right? These will be the two intersection points. And what I have to do, I have to find the length of the line segment joining the two intersection point of the curve. Y is equal to 4970 minus mod x and y is equal to x square. So the graph, अगर हम इसको ग्राफ पे देखें basically, तो y coordinate is same, right? Y coordinate is same. Now 70,4900 will be somewhere here. Okay, 70,4900. Okay, 70,4900 will be around here. Okay. And minus 70,4900 will exactly be opposite to it. Minus 70,4900.
4900. So that is the intersection point. So all I have to do is find the distance between these 2 points. So clearly plus 70 minus 70, so the total distance has to be 140, right? This distance between these 2 points will be 140. So 140 units will be the answer. So 140 is the distance between these 2 points, right? So I hope you get the idea. If you want to plot the graph will be like this, since it is a quadratic equation, so it will be like a parabola, and the graph of this equation that will pass through this point, right? So basically मुझे distance बताना है इन दोनों के बीच का, so that is 140. I hope you get the idea. These are the questions from the short answer section. So in the upcoming session, I will be taking the MCQs question as well in the tomorrow's session. Right. So thanks for watching. Do like and subscribe, and as well share it as well. Thanks for watching, guys. See you in the next session.